Hello students, myself Khushbu Pandya, Standard 9 and Chapter 5, Subject Computer, Introduction to Operating Systems. Students, today I will explain the operating systems. What is the use of operating systems and how to use. First of all, students, even through the CPU is very fast and it can basically to simple an operation like adding two numbers, multiplying the two numbers, etc., but not much more. Even simple operations like input of a number or output of a numbers and converting a string of a characters to uppercase or displaying an image on the screen must be built on top of these basic capabilities by writing a series of basic instructions. Also, the computer has a large number of peripheral devices like keyboard and mouse, monitors, hard disk, optical disk, printers, and other removable device. Operating this device requires executing a long and complex series of basic instructions. Students, you know that the computer is a many peripheral device. First is the keyboard, then mouse, monitors, and hard disk. Okay, and a printer also. So modern computer systems has a variety resources like the CPUs, memory card, uh, and secondary storage, networks, peripheral device, etc. And these are accessed by the multiple program running the concurrently, sometimes on behalf of different users with different sets of access rights. Clearly, there needs to be some authority that regulates and mediates and access to these resources. Students, you know that the operating system is a very useful because without operating system is the computer is useless. कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स अगर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होती है स्टूडेंट्स तो उसके थ्रू हम बहुत सारे हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ कर सकते हैं. तो नाउ अभी हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ओके, द नेक्स्ट कंप्यूटर्स विदाउट एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर अबव ऑपरेशन इज practically unusable device because it may not even have the basic user interface to interact with the users. Students, you know that without operating systems हम कोई भी सॉफ्टवेयर को इंटरेक्ट नहीं कर सकते यूज़र के साथ. ओके, तो उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा वे होना चाहिए जिसके थ्रू हम हमारे सॉफ्टवेयर जो है वो उसके अंदर एक्सेस कर सके. यू नो दैट स्टूडेंट्स कि हमारा जो मोबाइल है उसके अंदर भी वन टाइप ऑफ एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होती है एंड उसके थ्रू ही हम उसमें सारे जितने भी सॉफ्टवेयर है वो यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक हम यूज़ कर ही रहे हैं मोबाइल के अंदर भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यू नो दैट. एंड इसीलिए हम मोबाइल्स में इतने सारे जो फीचर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ द to make the computer easier to use and such the framework should also provide several types of abstractions and metaphors. A file system metaphors is one such. The examples that has been discussed in details later in this chapter. Okay, next concept is the operating system exists to satisfy all these needs and because it controls the whole systems and it is always the first program to be started when the computer system is turned on. Okay, then next concept is the what is an operating system. An operating system is the controller, resources and allocator and common service provider for a computer systems like the government. It performs these functions to ensure the smooth and mostly trouble-free operation of the computer. The operating system is the controller. That means operating system जो है वो one type of एक controller है and then resource allocator है. Okay, and common service provider भी है because for the computer systems like the government it performs these functions to ensure the smooth and mostly trouble-free operation of the computer. Okay, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू हमारे जितने भी फीचर्स है, जितने भी गवर्नमेंट वर्क है, बहुत सारी सर्विसेज है, बहुत सारे फंक्शन है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम इजीली कर सकते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट
The startup process of a computer. When the computer is supplied the power and turn on, the CPU takes control of the whole systems. It initializes itself by bringing all its subcomponents in non and ready to use state. Now it is the like vehicle who's been turned on, ready to driven, but where is the driver? The instructions to be executed by the CPU, and the computer has the types of permanent memory called ROM on personal computers. This is often called the ROM, BIOS, Basic Input and Output Systems, or simply BIOS, that contains an initial program. This initial programs called post power on self test. Students, you know that the कंप्यूटर स्टार्टअप प्रोसेस इज द, आपको पता है स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तब बूटिंग करता है, एंड देन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स उसमें हमने इंस्टॉल की है, तो उसकी वजह से जैसे कि कंप्यूटर्स के अंदर चलो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड उसके अंदर सारे फंक्शन भी है, बट उस फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए तो कोई भी चाहिए ना, तो उसके लिए जो यूज़र है वो फंक्शन को ऑपरेट करता है. ओके, द नेक्स्ट कंसेप्ट इज द functions of an operating system. An operating system performs the different sets of basic functions are mentioned below. The first is the providing the hardware access as the common service, controlling and regulating and supervising resources in the computer. Third one is the handling multiprocessor systems. Then fourth one is the starting and stopping program executions, controlling access to the memory, and then serving multiple users at the same time, providing the security and providing the other common services. स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो अलग अलग डिफरेंट परफॉर्मेंस एंड बेसिक फंक्शंस मेंशन करती है. उसमें फर्स्ट फंक्शन इज द प्रोवाइडिंग द हार्डवेयर एंड कॉमन सर्विस. Second one is the controlling, regulating and supervising resources in the computer, handling the multiprocessor systems and starting and stopping program executions, controlling access to the memory and serving multiple users at the same time, and providing the security and providing other common services. ओके तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ एंड डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस पे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वर्क करती है, और ये सारे इसके फंक्शन है स्टूडेंट्स. सो रिमेंबर दैट